एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज बातों बातों में। ये हमारा पहला एपिसोड है और सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं जो यहाँ पे इंडियन थिएटर ग्रुप रन करते हैं जिसका नाम है रंगमंच पोल्स्का। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सो वेलकम रोहन, वेलकम कौस्तुभ। थैंक यू। सबसे पहले रोहन, आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके, सो मेरा नाम है रोहनदीप कोंगे, फुल नेम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन क्रैको दे नो मी बाय रोहन। मैं पोलैंड आया 2016 में, मोस्टली इनटू आईटी सेक्टर। उसके बाद से ऑलमोस्ट 9 years नाउ पोलैंड में हूँ। इसके पहले मैं था मुंबई में, मुंबई से पहले पूना, और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ नागपुर से। सो इट वाज अ जर्नी फ्रॉम नागपुर टू पूना, मुंबई एंड देन क्रैको, पोलैंड। ओके। सो या पोलैंड में 9 साल हो गए मुझे। यहाँ पे मैं, मेरे वाइफ, मेरी एक छोटी बेटी और मेरे एक फरी फ्रेंड के साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ। ओके, फरी फ्रेंड का नाम क्या है? शैडो। ओह, वेरी नाइस नेम। 5 years का लैब्राडोर है। ओके। सो कौस्तुभ, आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए प्लीज। तो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। सो born in कोल्हापुर but brought up educated in पुणे। सो बेसिकली मैंने पुणे में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर मैंने बीबीए कंप्लीट किया, फिर लॉ कंप्लीट किया, और ये करते करते तो नाटक तो था ही। जो मतलब बीएमसीसी में मैं था तब से नाटक कर रहा हूँ। और कमर्शियल थिएटर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप से बिलोंग करते थे। ओके। तो बेसिकली I am also like Rohan here since 2016 in Poland. Married to a Polish. We have a furry friend, furry. क्या बोलते हैं? Baby. Furry baby. So we also we have 3. Yeah, I have 3 furry babies. Okay. So one is a dog. Her name is Arya. Okay. 2 cats, Ginger and Pepper. Oh my god. Yeah, so like it's houseful. No kids yet, but we plan to, of course. तो वही है कि 9 साल हो गए यहाँ पे पोलैंड में आके, और फाइनली वही है कि हम दोनों को भी कुछ मिसिंग लगा कि थिएटर ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे जो कम्प्लीटली इंडियन हो। तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे, पर यही बैकग्राउंड है। So my question is to you now. How was your experience being in Krakow, and do you like it? And what was maybe some challenges you face, or maybe some happy moment that you had in Krakow? Please do share. Of course, like Krakow is love. I cannot imagine living anywhere in any other city of Poland. I love Poland as a country, respect, but Krakow is very close to my heart. The reason is I find many similarities between Pune and Krakow. One very most important being is that it's the cultural capital of Poland. Pune is also cultural capital of Maharashtra. Also a student city. Krakow is also student city. Pune is student city as well. But the most important is that I feel very much at home in Krakow. The people are so lovely here, so open. I have been to all the cities, but when I say home, it's always been Krakow. And when I also got married, that time I told my wife that if we are going to settle down in any city of Poland, it has to be Krakow. Okay. Only then we can think about it. And I'm talking about marriage. Okay. So that's how Krakow is close to me. The challenge is, to be honest, I didn't face many challenges as such. It was just initially in the when I was very new in Krakow, the language was a challenge, but everyone speaks English here. I don't think if you reach out to them, sometimes you feel like they are angry or something, but when you reach out to them, they are the polite people ever. See, no, you're mixing 2 things. A Polish person doesn't smile. So they have an expression. Even if they're happy, they're sad, they're angry, they don't give any expressions. So you need to understand that. That's like a very common thing here. So we have to adapt, right? We are from India. We are very expressive.
Yeah. as people, but here they are very reserved. Yeah. So I think it's all about how you adapt in a country, wherever you go in the world. But for me, Kraków has always been that special place, and I think it will always will be for me. And what about you, Rohan? See, a lot of things Kaustubh has already covered. Apart from that, I would say Krakow is particularly very safe. If we talk about safety over here, it is very safe. You can roam around in the city at 2 in the morning, 3 in the morning. Yeah. Very safe city, very calm. Though the population has increased compared to what we have seen in 2016. Oh, yes. Tremendously. But even after that, the life is very serene and calm in Krakow. Yeah. It makes you feel that you are still at home. Yeah. So but आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हो? Like उसका भी एक फनी स्टोरी है। please. यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने थे, जो इंडियन कम्युनिटीज को लेके, एक तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उससे हमारे एक महाराष्ट्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। वहाँ पे मैं सोचा कि चलो गेट टुगेदर किया जाए, बाकी लोगों के साथ मिला जाए, क्योंकि सब लोग नए आए थे उस वक्त पोलैंड में। इट वाज अराउंड 2019 आई थिंक, 18 और 19। तो उस वक्त उस ग्रुप में मैं पोस्ट किया था कि अगर कोई मिलना चाहता है तो लेट्स गेट टुगेदर फॉर अ कॉफी वन इवनिंग। एंड फाइनली ओनली एक ही बंदे ने रिप्लाई किया और वो कौस्तुभ था। तो एट द एंड हम दोनों ही रात में मिले, शाम में मिले हम लोग उस दिन, सब वेले लोग। सो वहीं पे मुलाकात हुई हमारी। Okay. सो 2019 से लेके अभी तक 2024 हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। ओके, परफेक्ट। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रंगमंच को लेकर है। सो आप लोगों ने स्टार्ट तो करा, जैसे आपने बोला व्हाट्सएप ग्रुप से आप मिले हो, बट ये कैसे आपने डिसाइड करा कि भी थिएटर ही करना है? कोई अदर ऑप्शन, जहाँ कोई अदर आपने मे बी चेक क्यों नहीं करी? लाइक ओनली थिएटर क्यों करा? आपकी बैकग्राउंड थिएटर से है इसलिए, जहाँ आप लोगों ने डिसाइड करा कि नहीं इंडियन यहाँ पे ज्यादा है अभी, तो कुछ ना कुछ तो करा जाए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, करेक्ट। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ओके, सो पहले कैसे दिमाग में आया नहीं कि थिएटर ही करना है हम लोगों को, बट कौस्तुभ का बैकग्राउंड था थिएटर का। मुझे और मेरी वाइफ को हमें थिएटर देखना पसंद था। जब हम लोग मुंबई में थे तब हम लोग बहुत थिएटर्स जाते थे, आफ्टर ऑफिस आवर्स हो गया, फिर वीकेंड में हो गया। धीरे धीरे बहुत सारे आइडियाज़ आए हमारे दिमाग में, हमारे फ्रेंड्स के दिमाग में, बट एक कॉमन लिंक थी थिएटर को लेके। और पोलैंड में भी थिएटर होते हैं, बट मोस्टली पोलिश। और उस टाइम एक इंग्लिश थिएटर ग्रुप था जहाँ पे हम लोग उनके थिएटर देखने जाते थे, बट वो इंग्लिश में था। तो कहीं एक डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो ऐसे ऑन एंड ऑफ क्या करना है क्या नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम ऑफिस। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए इसे। तो हमने आई थिंक 2021 में फर्स्ट प्ले किया था हम लोगों ने। यहाँ पे एक इंडियन फेस्टिवल के इंडियन फेस्टिवल का प्लानिंग हो रहा था यहाँ पे। उस वक्त जो कल्चरल्स जो डिसाइड हो रहे थे, तो उसमें कौस्तुभ ने बोला कि चलो लेट्स ट्राई वन थिएटर प्ले ओवर हियर। सो उस प्ले में हमें अच्छा रिस्पांस मिला। दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑल टुगेदर एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन क्राको, फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर। उस वक्त रिस्पांस अच्छा मिला हम लोगों को, तो फिर दैट वाज गुड। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, यहाँ पे जब इस साल के इंडियन फेस्टिवल का प्लानिंग हो रहा था, तब कौस्तुभ ने बोला कि लेट्स ट्राई अनदर प्ले। और जो सेकंड प्ले किया यहाँ पे, वो सेकंड प्ले कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू था, हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। तो आप लोगों ने ये जो प्ले फर्स्ट प्ले करा था उसमें इंडियन ही एक्ट कर रहे थे, जहाँ इट वाज लाइक पॉलिश एंड इंडियन? तो एक्चुअली हमने कोई मतलब थिएटर रेंट पे लेके नहीं रखा था। तो हमने गणपति फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। तो हमने यहाँ का जो टेम्पल है, हिंदू टेम्पल, वहाँ पे हमने वो प्ले परफॉर्म किया। तो कुछ उसमें प्रोफेशनल नहीं था। हमने एक नॉर्मल विदाउट सेट, विदाउट लाइट्स, सिर्फ म्यूजिक था उसमें। तो वहाँ से हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ, वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई। रोहन उस टाइम पे नहीं था वो प्ले में, पर हमारा जो ग्रुप है वो हमने एक साथ मिलके एक अच्छा कुछ परफॉर्म किया। कॉमेडी प्ले था, जो मैंने खुद मतलब लिखा भी नहीं था वो, मतलब हमने सिर्फ इम्प्रोवाइज किया था। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम की इतनी कमी है लोगों को, क्योंकि सब जॉब्स के बाद 6 बजे मिलते हैं, तो स्क्रिप्ट कब लिखेंगे। तो हमने पूरी तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया और वो प्ले सेटअप किया। और जो था 2 साल पहले, ये साल हमने एक थोड़ा कॉमेडी छोड़ के पूरा ड्रामा बेस्ड एक प्ले क्रिएट किया, जहाँ से हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि हम प्रोफेशनल
स्टेप ले सके कि हम जाके थिएटर में परफॉर्म कर सके, इसलिए रंगमंच पोल्स्का ये आइडिया जनरेट हुई। तो सबने मतलब सपोर्ट किया ग्रुप में कि हम मतलब इसको रजिस्टर करेंगे, इसको हम प्रोफेशनली लोगों के सामने लाएंगे। Okay. तो ये यही है इंसेप्शन स्टोरी। So generally कितने मेंबर थे आपके पहले थिएटर ग्रुप में? जो हमारे कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तकरीबन 16 लोग हैं, पर अब तो बहुत लोग ऐड हो रहे हैं अभी। हाँ। और ये 16 लोग हैं, all of them are not actors. Okay. So we have a supporting staff who helps us in lighting, Okay. sound, music, and stage decoration. स्टेज मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये भी मतलब हमको करते करते ही पता चला कि कौन किस में ज़्यादा बेटर है। नॉट ऑल आर एक्टर्स, राइट? Like everyone has to learn something from somewhere. Exactly. So we had directors, we had writers, we had actors, but that's not all what theater is all about, right? We need more people to, control the music, to control the lights, to control the stage. जो blackouts होते हैं उसमें set changes होते हैं, तो उसका प्लानिंग लगता है एक अलग से। तो प्रॉपर हमने अभी डिपार्टमेंट्स सेटअप किया है, तो यही डिपार्टमेंट्स मिलके पूरा रंगमंच पोल्स्का बनता है। तो हम में मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि हम अगर मिले तो एक बंदा अगर नहीं आ पाए तो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में कि अरे क्या हुआ, कि आना चाहिए उसने प्रैक्टिस के लिए। तो एवरीवन इज इक्वल, और हम प्लानिंग भी इक्वली सब लोग मिलके ही करते हैं। Okay. रोहन, एनीथिंग टू ऐड? इसमें और एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, जो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, सपोज कोई कैमरा हैंडल कर रहा है, कोई लाइट हैंडल कर रहा है, अगर हमारे पास एक्टर्स की कमी है तो दिस गाइज बिकम्स आवर एक्टर्स। Yeah. So they do multiple tasks. Yes, multiple in tasks. one. Okay. So I think it's much more ideal, and also I think it's better for the person who join your community. एक स्टार्टअप थिएटर ग्रुप के लिए दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, Yeah. क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू गेट 100% एक्टर्स और 100% कैमरामैन Yeah. to support us. Okay. So we step in each other's shoes whenever required. Yeah, so I think it's very helpful for person who join you. So I have another question, because people who sometime what happen, like they come to Poland, they like to work or maybe they like to participate in English and maybe some other language, because not all Indians speak English or Hindi, right? Right. So in your theatre group you have this opportunity that they can participate, or if they are actor they can participate in any language. Yeah, definitely. So though we started with Marathi language play first, but we have a couple of friends who are interested in script writing, so they are helping us in writing scripts in English. Okay. That is first. So if we see good attention coming in from audience, interest generating up, then we try to pull in Polish people also to have some Polish scripts and get the plays running in Polish language. So the main focus would be Hindi, English and Polish, so that we cover more international audience. So it's a multi-language theatre group. Yes. So in a way. So we started out with Marathi because the primary audience was Marathi during the festival, and we would love to stick to that as well, because we have a huge group of Marathi people here, also in Warsaw. So of course multi-language is our focus. We want to do English, Polish, Hindi, Marathi. But in the future, if someone joins us and they say, okay, we have a Bengali group, for example, or we have a Tamil group, and or Punjabi group. Or Punjabi group, yeah. Yes. So, and we would like to do a play in Punjabi, of course, more than welcome, because it's not only language limited, right? Drama is not language limited for me. If there is no language and if someone tells me to do a drama, I'm more than happy to do it in mine. But that's another story. But language में क्या होता है कि limitations बहुत आते हैं, क्योंकि हम लोग culturally इतने adaptive है अपने इंडिया में ही। अगर आपने पंजाबी प्ले किया, मैंने मराठी प्ले किया, तो उसमें इतने कल्चरल डिफरेंसेस है। तो like anger will be a different way than in a different city. Exactly. So इसलिए हमारा भी प्राइमरी फोकस इंग्लिश क्यों है, क्योंकि हमको एक न्यूट्रलिटी लानी है। क्योंकि हमारा ऑडियंस, हमको पॉलिश लोग भी आने चाहिए। वी वांट पॉलिश पीपल टू कम एंड वॉच आवर प्लेस, एंड फॉर देम द बिगेस्ट चैलेंज विल बी दैट दे वांट टू सी इंडियन प्लेस बट इन इंग्लिश। तो पूरा मतलब नैरेटिव ही चेंज हो जाता है। हाउ विल यू परफॉर्म इन इंग्लिश, right? If you are a Marathi person, you are a Punjabi person, you are a Bengali person,
for example, and we tell you to perform something in English and the story is based in India. तो वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, ये मेरे को अभी लग रहा है, but I think we will overcome that challenge. Yeah, I think it when you, because artist is something that can mold the impression in any language, because it's not like we cannot say like if a person is speaking English, his expression and his maybe the impression what he wants to convey, it's not gonna be understandable, right, for other audience. But sometimes it's possible. But yes, I can see that there can be sometimes challenges, definitely. But yes, I totally agree with So that. रंगमंच पोल्स्का का जो मेन विजन है वो है इंडियन कल्चर इंडिया से बाहर लेके आके बाकियों को दिखाना. इन जनरल हमने इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज हमने ट्रैवल की है विद इन यूरोप, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सो इटली हो गया, जर्मनी हो गया, मे बी यूके अगर आप कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है दैट इज मेनली आउट ऑफ द बॉलीवुड म्यूजिक. बॉलीवुड के अलावा या फिर जो अभी आर्टिस्ट इंडिया से बाहर आके परफॉर्म करते हैं, इट इज मोस्टली बॉलीवुड म्यूजिक. जो इंडिविजुअल रीजनल कल्चरल परफॉर्मेंस जो होती है यूरोप में, दैट इज वेरी लिमिटेड, बहुत कम होती है. सो हमारा प्लान यही है रंगमंच पोल्स्का के द्वारा कि हम लोग ये जो रीजनल आर्टिस्ट जो है या फिर रीजनल म्यूजिक फॉर्म्स हो गए, रीजनल डांस फॉर्म हो गए, ये लेके आके यहाँ पे पोर्ट्रे करना. सो पीपल विल नो दैट India is much more than Bollywood. India is much beyond Bollywood. There are other forms of artistic plays, languages, dance form, music forms, which are also there, and they are not exposed to it yet. Yeah. Okay. So main हमारा vision, motive हमारा वही है रंगमंच पोल्स्का. Okay, so I have another question. For example, if some artist or maybe lyrics writer or anyone who wants to join your group, which kind of opportunity you have in your theatre group that they can get after joining? So the biggest opportunity I see right now is that we are arranging workshops, theatre workshops for people. So it's for now we are doing our own workshop because we want to polish our skills first, and then we want to reach out to the public and they can join us. So right now it's going to be me and there's one more our very dear friend Vikrant who will be arranging these workshops and kind of leading them. So in these workshops, as you mentioned, the new talent which will come in will be able to showcase their skills. And when I'm saying theatre workshops, it's not only limited to acting. If you're a lyricist, if you're a writer, if you're a dancer, if you're a musician, theatre workshops help you to kind of mix all your talent and theatre put together, and then you can find something within yourself which you even don't know of. Like for example, you're a musician and you have been performing all your life. You're trained in one art properly, but when it comes to theatre, we want to kind of mix these artists with us, क्योंकि हमारा एक एंड विजन है जो हम ये साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल हम लोग सब आर्टिस्ट को इकट्ठा स्टेज पे आके सब फॉर्म्स मिक्स करना चाहते हैं. तो उसमें डांस रहेगा, उसमें ड्रामा तो ऑब्वियसली रहेगा, उसमें म्यूजिक रहेगा, उसमें इवन इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग यू कैन ड्रॉ. तो ये अगर सब आर्ट फॉर्म्स एक साथ स्टेज पे आ जाए तो इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट. सो अपॉर्चुनिटी वाइज उनको यही लगता है मुझे कि हम जो स्टोरी बोलना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट हम लोग डिवाइस करते हैं, तो उसके आजू बाजू में उनके जो इनपुट्स आएंगे वो हम लोग 100% लेंगे. और मुझे लगता भी है लाइक अगर एक बंदे के पास अगर वो डांसर है, जहाँ वो एक्टर है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज में अच्छा होगा, हो सकता है वो मल्टीपल चीजों में भी अच्छा हो. बिल्कुल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि भी आप एक ही चीज के साथ स्टिक करो, वहीं पे आप अच्छे रहोगे, बट इट्स नॉट ट्रू इन अ वे, बिकॉज कुछ लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट होता है जो कहीं पे भी वो यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो इट्स गुड कि भी आपका थिएटर ग्रुप ये दे रहा है. सो और एक चीज ऐड करना चाहूंगा, विक्रांत ने जो वर्कशॉप डिवाइस किया है उसका नाम है इन सर्च ऑफ ट्रूथ. ओके. तो उसका मतलब इन सिंपल वन लाइन इज दैट वी नीड टू फाइंड द ट्रूथ विद इन आवरसेल्व्स.
Yeah, I actually joined one of your workshops. So. Exactly. So you I know. so she already knows about this. So basically वो truth क्या है जो Yeah. आपने exactly कहा वही है कि अगर एक आर्टिस्ट हमारे वर्कशॉप में आए तो उनको उनका ट्रूथ पता है कि फॉर एग्जांपल आई प्ले वायलिन राइट Yeah. बट अदर देन दैट व्हाट आर द डिफरेंट ट्रूथ्स हिडन इनसाइड योरसेल्फ यू डोंट नो तो Yeah. वो जो एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है वही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये वर्कशॉप में. Okay. So for just to add to his point, हमारा जो मेंबर ग्रुप है उसमें एक पर्सन है which is who is good in managing the music. Okay. Okay? वो हमें अभी पता चला. वो बहुत सालों से करते हुए आ रहा है इंडिया में. इंडिया में ही यूज्ड टू ऑर्गेनाइज म्यूजिक कॉन्सर्ट्स इन द पब्स इन इंडिया. वहाँ से उसे एक्सपीरियंस मिला म्यूजिक कैसे ऑर्गेनाइज करना है, म्यूजिक कहाँ पे कट प्ले होगा. ही नोज एवरीथिंग. ये हमें अभी पता चला. हम लोग उसे पहचानते 5 साल से, पर अभी पता चला हमें. Apart from that, he also helped other members in the group to organize the lights properly. So he knows two part of the play, correct? Yes. So वैसे ही एक स्टेज रहेगा ये community members के लिए who can come on the stage and portray their art and showcase it to the wider audience. Yeah. जो अभी तक वो एक small group के लिए कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. They're just doing it for their own pleasure. Yeah, it's same for me because जब मैं स्कूल कॉलेज टाइम पे थी तो मैं पार्टिसिपेट करती थी भंगड़ा ग्रुप में. तो मुझे पता नहीं था कि भी मैं टीच भी कर सकती हूँ किसी को. तो वो आई थिंक कपल ऑफ डेज बिफोर कि भी वहाँ कोई ग्रुप ने रीच आउट करा कि भी आप सिखाओ हमें. तो देन आई गॉट टू नो कि भी यस आई कैन डू दैट सेम एज वेल. सो समटाइम पर्सन आल्सो डोंट नो कि भी किसी ना किसी को उसको पुश करना पड़ता है. अब मैंने भी कभी डायरेक्शन किया नहीं था लाइफ में. मैं मतलब ज़्यादा करके एक्टिंग ही करता था. पुणे में मतलब बहुत गणपति के टाइम पे जो हमारे सोसाइटी में प्लेस होते थे वो करता था डायरेक्ट. पर यहाँ पे आके डिफरेंट कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ कर सकते हैं. तो एडिंग टू माई पॉइंट, ये प्लेटफॉर्म अगर आपने कभी स्टेज पे कुछ परफॉर्म ही नहीं किया हो लाइफ में तो ये प्लेटफॉर्म आपको फिर भी ओपन, वी वेलकम यू विद ओपन आर्म्स. क्योंकि आपको पता नहीं रहता आप क्या आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है. तो अगर किसी ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया रहेगा बट यू वांट टू, इट्स इनफ फॉर रंगमंच पोल्स्का. क्योंकि वो टैलेंट को पॉलिश कैसे करना है, उनको मतलब चांसेस कैसे देना, ये हमारा काम है. ओके. सो रंगमंच पोल्स्का जो है वो अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं कि भी वो सीख सकते हैं और प्लस वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इन एनी एरिया वेयर दे लाइक टू मूव. सो मोस्टली लोग स्टक हो जाते हैं जब हम लोग मे बी आप अगर रंगमंच पोल्स्का की बात करो कि भी अगर आपने जब मे बी अपना ओपन करा होगा तो आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस हुई एट दैट टाइम कि ये स्टार्ट तो हमने कर दिया और हाउ इट्स गोना वर्क आउट एंड सो ऑन. सो आई लव टू नो दोस थिंग्स. रोहन बताएगा उसके बारे में. सो चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो हमारा इमीडिएट चैलेंज है लोकेशन के लिए, जहाँ पे हम वीकली मीटअप करके हम लोग रिहर्सल कर पाए. फिलहाल एक लोकेशन है बट द ओनली प्रॉब्लम विद दैट लोकेशन इज इट इज ओनली अवेलेबल ऑन वीकडे. ओके. सो सबके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होगा उस लोकेशन पे आफ्टर ऑफिस आवर्स जाके रिहर्स करने के लिए. सो दैट इज आवर मेन चैलेंज एज ऑफ नाउ. सो सेकंड चैलेंज है हमारा लैंग्वेज को लेके. दो हमने हमारे फर्स्ट 2 प्लेस किए हैं मराठी में, बट वी वांट टू मूव अहेड ऑफ मराठी एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. We have script writers, but we don't have effective knowledge basically to write those scripts in Hindi and in English. So we are working towards it now. Yes. We are trying to rope in some more people who would help us with those scripts in those languages. And third challenge jo hai, that is our whole Rangmanch Polska as of today is self-finance. Okay. Yeah. So we all are contributing from our own pockets to run this group. And we'll try it and figure out how to get some more financial support from maybe the government organizations over here, the cultural department in Poland and in Krakow, to help and build us upon. But is it hard, according to you, to reach out to government for a support here, or? Definitely it is hard because language is the main barrier. Because most of the government organizations, they work out of Polish language. Okay. Finding someone in those offices who will speak English is a challenge for us. But then we have to learn Polish also for that. Yeah. So that is one of the challenge which we are trying to overcome from last 9 years to learn Polish. Yeah, I mean, it's
Polish is of course a challenge, and we are trying to learn. Like we are attending classes. Both of us. I'm here like long. I couldn't learn. It's very hard language. I Yeah. think if I would try maybe learn Dutch or something, maybe I will be easier for that. I mean, it depends. All depends. So, for example, we both are attending the same exact class of Or Polish. maybe this is a problem. You Yeah. should join a different class. No. It's a very good class. Very good class. But we have an understanding of Polish. We understand a lot of Polish, but when it comes to speaking, Yeah, it's we a challenge. start, yeah. Forming sentences. Yeah. But coming back to the point, the biggest challenge I feel is to reach out to the audiences. That is going to be a biggest challenge which I foresee already. I know for a fact that Polish people love Bollywood, they love Indian food, and they love color. Yes. If you see, Polish people are mostly dressed in gray. Yeah, black. they are three colors. Yeah, they're like three- maybe blue, Yeah, which light is- blue, and which is black. which is great. And grey. I love those colors. Nothing against them, but what attracts them is because we are so full of color. Yeah. Even with our culture, like wherever any state you pick up in India, we have our own different dance styles, our own Yeah. costumes, right? And they know about it. Every state have a different. Yes. So now reaching out to them, we have to find out different kinds of social media platforms. For example, we already have an Instagram page. We already have a YouTube page. But how to attract them is still a challenge because we don't know where these people are. So Okay. we need to reach out to them face to face. Like I'm a very old school person, so I believe in to actually go and speak with these people, and and to visit local theaters as Yeah. well. Collaborate with the local Polish Yeah. theaters so that they get to know us, who we are. Yeah. Correct. Yes. So if we don't go out physically and reach out to the community, we will always be stuck to the digital world. Yeah, and it's also important if you have someone who speak a little Polish or something, they can just start communicate. And most of the people I see in Krakow, they speak English. So, Yeah. and it's quite easy, It but is you quite have to easy, just make true. effort, I think, in the end of the Yeah, day. This exactly. is the only thing. But yes, I definitely, I think it will be easier for you, maybe with our podcast. If there will be some Polish people, please join their theater group. So they will have someone from Polish community, and that would be very nice. Yeah, actually speaking about that, we also have in our plan to reach out to the Indology studies here in Jagiellonian University. So they have basically Indology studies is studies about India, and they have a department here. So we have a plan to reach out to them, and we welcome people who would like to come and even do an internship with us. Okay. Yeah, so this is something which we have in our plans, and we want to approach them ourselves and welcome these students to come and do any part of theater with us, be it stage management, be it just finances, anything you want, whatever you're interested in. So now you said about your future plan. So Yeah. my next question is like, what's Yeah. the future plan for theater group Polska? So, as I said earlier, that Rangmanch Polska is a platform to get all the interdisciplinary art forms on one stage, be it drama, art, music, poetry recitation. Then you have maybe a musical. So this will be a platform for displaying all such kind of arts from India and displaying it to the international audience in Poland. So with the help of these, we encourage the young crowd in the universities over here to help us with that. They will also get a kind of experience out of this, that how to manage a stage, Yeah. lights, camera, music. That is one. And one more thing I would like to add over here is Suchandra, our member, so she is working on curating the shows for Rangmanch Polska. So she is currently working on that and looking after how to get these art forms out of the Indian people or from the local communities. Yeah. We know they have, but they haven't reached out to a bigger audience. So she will curate such kind of performances for Rangmanch Polska, and in future we will try to have our first performance maybe in February or in Yeah. March. So we'll have one show for that. So we are working towards it now. Yeah. Okay. So basically, just to give you an example, like
it's just as basic as having a jugalbandi between a tabla player and someone who has training in classical music. So something which is original, which comes out from the artist, and someone who knows how. We already have a very good classical dancer with us working. So someone is playing a tabla, someone is singing, and someone is dancing. Yeah. That will be in itself a spectacle. So we want to curate such shows from Rangmanch Polska's studio. Under Rangmanch Polska's banner. Thank you. Under Rangmanch Polska's banner. Yeah. Okay. So I like to ask, what are your upcoming shows that coming in like next months? Okay. So the last play which we did in Marathi called Pravas. So we are writing the script of Pravas in English. And we plan to have our first English play maybe late November. So please look out for that. We will send out our social media invitations to everyone for the play in English. And apart from that, we have a couple of more English plays which are work in progress right now. The script is being written. One of it would be a nice horror comedy on stage. And yeah, we have a couple of more Hindi plays also, which are still script is under progress for that. Okay, perfect. Last question from my end. If person wants to join your group, and what are the requirements and how they can join? And so definitely we'll give a Instagram and your other details. Of course. But despite being that, what else, how they can join? You answered the question. So yeah, of course, we have the Instagram account, we have the YouTube, we have the Facebook, and all these accounts have a direct link to WhatsApp group. So we have the Rangmanch Polska WhatsApp group, which is like in existence right now. Okay. So of course, I know you guys will put up the links down below in your video, but at the same time, if you see any event of ours, and if you wish to come and speak to us directly, if you come for any plays of ours, please come and just gel in directly. We love to speak to people, and we are I think we are more connected to the audience, like face to face, as I already mentioned. So social media in one place, of course, it's always there. But if you see us performing somewhere, you're the audience, you would like to be a part of us, please come and speak to us, and then we'll just let you in with open arms. Oh, perfect. So thank you, Rohan. Thank you, Kaustubh, for joining us today. It was pleasure talking with you, and I hope I will be also joining your group soon. So we are waiting for it. We are waiting for it. You're already a part of the group. I'm already a part of it. So Yes. I will be waiting for it. So I think that's all for today. And thank you again for joining us. And happy Diwali. Happy Diwali. Happy Happy Diwali. Diwali to everyone from Rangmanch Polska. Happy Diwali, guys. And what's your channel's name? Baaton Baaton Mein. So one more thing, please like, subscribe, share Baaton Baaton Mein, and follow them for the updates. Also, click on the bell icon. Very important. So thank you. Almost they cover everything. And happy Diwali once again, everyone. And stay tuned. And thank you. Bye. Thank Bye. you.